Hello, my dear students. Welcome back in our today's class, and we are in a chapter number 7, that is lenses. Okay, so before moving to our today's topic, let's revise what we have learned in our last class. Okay, yes. So in our last class, we have learned about the images which are formed by convex lenses. You all know that what is convex lens? Yes, and what is concave lens? Yes, you all know that very well, and you have to keep that image in your mind very well. Don't forget this, students. This is very important. Okay, so what is the rule number first? That is, when the incident ray is parallel, this is the incident ray, this is parallel to the principal axis, then what happened? The refracted ray क्या होती है? Passes through the principal focus. This is the principal focus, right? Yes. So this is the first rule. Then what is the second rule? Ulta of first rule. Okay, when the incident ray passes through the principal focus, यहाँ से पास हो जाती है, then the refracted ray is parallel to the principal axis. Okay, तो ये दोनों जो है वो parallel हो जाते हैं. And the third rule is when the incident ray passes through the optical center. This is the optical center. Yes, you know that, right? Yes. So then what happened? It passes without changing its direction. तो जब वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो एकदम स्ट्रेट जाती है विदाउट चेंजिंग एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. Okay, so these are the 3 rules for what? Convex lenses. Then we have seen one activity. Yes, so here is a candle which is called as object. Okay, here you can say this is the object. This is the convex lens. Yes, this is the convex lens. Yes, and this is what? This is here you can say this is the image which is formed by the object. Okay, that is called as a screen. Okay, and this is what? This is, here you can see this is inverted. ये उल्टा दिख रहा है आपको. Okay, here this is a straight candle and here you can see the candle is ulta. Okay, so here what happens? You all know all these terms. This is the optical center, focal principal axis. Yes, this is the principal axis. Focal length, फोकल लेंथ क्या होती है? O से लेके F1 तक. ओके, और O से लेके 2F1 तक. और सेम एज अ राइट हैंड साइड, सेम एज अ लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एंड क्या होता है? दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल फोकस. ओके, yes, so when the incident ray here you can see BC. okay, ये parallel होती है principal axis को. then what happen? it will straight go from where? from the principal focus. okay, वो कहाँ से जाती है? वो principal focus से जाती है as the rule number 1 state. okay, yes, then here you can see this ray BO कहाँ से? B कहाँ से जा रही है? O से, that is optical center. तो वो कहाँ से जाएगी? एकदम straight. okay, and where this both lines will meet, that point is called as what? where the image gets formed. okay, ये object का यहाँ पे image formed हो जाएगा. but here you can see the image is what? inverted. okay, yes, so this is what? this is a real and inverted image. okay, yes, then we have seen the virtual image. virtual image क्या होती है? here you can say this is a convex lens. yes, here this is the object. okay, तो एक लाइन जो है यहाँ से पास हो गई प्रिंसिपल फोकस से, एंड द सेकेंड लाइन इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. okay, but यहाँ पे you will see that the two lines never meet each other. वो कहाँ पे मीट हो रही है? नहीं, दे विल नेवर मीट ईच अदर. सो वॉट वी हैव टू डू? बैकवर्ड डायरेक्शन से हमें ये पॉइंट को ऐसे यहाँ तक लेके जाना है, सो दैट दिस विल मीट, द टू लाइन्स विल मीट एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पॉइंट we will get an image. okay, image of this object. ठीक है? yes, so here you can see the image which is formed. okay, that is virtual image is formed and it is called as erect. erect which means what? this direction is same and here the image which will form, this direction is also same. but यहाँ पे आप देखोगे तो this is same but this is different, this is inverted. so this is called as real and inverted. okay, and this is called as what? Virtual and erect. okay, erect which means same direction.
ठीक है. Yes, so till this we have learnt in our last class. Now we are going to see a very beautiful concept, that is the images which are formed by concave lenses. Okay, concave lens, this is the concave lens. ठीक है, don't confuse between the concave and convex. It is very easy, just you have to pay attention. Yes, so now here you can see this is the concave lens. Yes, so first what it tells, when the incident ray is parallel to the principal axis, this is the incident ray which is parallel to the principal axis, okay, PA. Yes, then what happened, the refracted ray when extended backward passes through the focus. ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको कैसे लेके जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको ऐसे एक्सटेंड करना है. ठीक है, एंड देन वी हैव टू और फिर उसके बाद वो उसको लेके कहाँ तक आ जाना है, प्रिंसिपल फोकस तक. ठीक है, देन इट पासेस थ्रू द फोकस. यहाँ से लाइन आ गई विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देन वी हैव टू what we have to do, the refracted ray will go like this. It will not go like here or not go like somewhere else. It will go like this and then उसको extend करके कहाँ तक लेके आना है, प्रिंसिपल फोकस तक. ठीक है, yes. And the second rule will say that when the incident ray passes through the focus, जब भी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो जाएगी, यहाँ से फोकस से, देन द रिफ्रैक्टेड रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी. ओके, दिस रूल एंड द कॉन्वेक्स लेंस का जो सेकेंड रूल था दैट इज सेम, सो यू कैन इमेजिन दैट. ठीक है, येस. नाउ हियर यू कैन सी, as shown in the figure, this figure, object PQ is placed between F1 and 2F1. okay, PQ जो है वो कहाँ से है, F1 and 2F1 के बीच में, in front of a concave lens. In front of concave lens, yes. The incident ray PA, here you can see the incident ray PA starting from P and going parallel to the principal axis. yes, goes along AD. AD यहाँ से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन होगा तो AD जो है ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ तक जाएगी. इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड बैकवर्ड, AD को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इट अपियर्स टू कम फ्रॉम F1. ओके, येस. द इंसिडेंट रे PO स्टार्टिंग फ्रॉम P पासिंग थ्रू PO, यहाँ पे देखो पासिंग थ्रू O. ओके, यहाँ पे O है, गोज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन after refraction. yes, okay, and PO intersects an extended ray AF1. PO कहाँ पर है, AF1, AF1. okay, yes, at P dash. और ये दोनों जो है इसको एक्सटेंड किया, यहाँ तक लेके आए, और ये लाइन जो है वो वैसे ही है, और दोनों कहाँ पर मीट हो रही है, यहाँ पे. सो वी विल कॉल दिस एज, this is the image of P. So P dash Q dash is the image which will get formed. okay, yes. क्या कौन सा पॉइंट देखना है जहाँ पे दो लाइन मीट हो जाती है. okay, as the point Q is on the principal axis, yes, okay, the image is formed along the axis at the point Q dash directly below P dash. yes, तो इमेज यहाँ तक, यहाँ से ही फॉर्म हो जाएगा. yes, thus the P dash Q dash is the image of PQ. तो PQ यहाँ पर है and P dash Q dash is the image which is formed. Here you can see the image formed by concave lens is virtual. Virtual क्यों? because हम लोगों ने उसको extend करके लेके आए. okay, that is not a real image, virtual image, because we extended that. okay, erect and smaller than the object. erect which means what, यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन कैसा है, upward, इसका भी डायरेक्शन upward डायरेक्शन है, so that is called as erect. And smaller than the object. Here you can see the object is little big and this is small. okay, yes. So this is about the images formed by concave lens. So here the positions are given at infinity, the position of an object, the position of image where we will get on the first focus F1, and the size of the image, point image we will get, and obviously क्या है, कॉन्केव लेंस है तो उसमें क्या मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट.
So this you have to draw, this is a work for you, this you have to draw students and you just do it by yourself और देखो कि आपको आ रहा है क्या, ठीक है. Yes. Okay. Then yes, a very important concept, that is a sign convention. Already you have learned this in your earlier standard, but again we are going to revise it. Okay. So what is sign convention? Here the direction of incident ray is given. Okay, this side. This is what? This is a convex lens and this is a concave lens. Okay, here you can see everything is similar. This is optical center, principal axis, सब कुछ similar है, ठीक है. Yes. So here you can see the height above. अबाव जो हाइट होती है, ये वाले एक्सिस की अबाव जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसे ध्यान में रखना है. एंड ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिलो जो हाइट होती है इमेज की वो नेगेटिव होती है हमेशा. सेम इज हियर ऑल्सो. ओके, द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द हाइट ऑफ इमेज, height, the image height above the principal axis, here you can see that is positive, and the height of image below the principal axis is what? This is about a negative, ठीक है. and the distance जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव होता है एंड राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव होता है. यहाँ पर भी सेम, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन it will taken as negative, and the distance of the image of the right hand side, okay, of the origin, this is taken as what? Positive. So here you can see, yes, so here you can see according to the Cartesian sign convention the optical center O is taken to be the origin. Yes, so O जो है वो origin है. Yes, the principal axis is the x axis, principal axis जो है वो x axis है of the frame of reference, and the sign convention क्या है वो देखते हैं. the object is always placed on the left hand side of the lens. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से साइड पे रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, राइट हैंड साइड पे नहीं रहता. सो ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. Okay, all the lenses, all the distance parallel to the principal axis are measured from the optical center. तो जितने भी डिस्टेंस है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो कहाँ से मेजर करेंगे? यहाँ से, ओरिजिन से, फ्रॉम द पॉइंट O. ओके, सो फ्रॉम द पॉइंट O यू हैव टू मेजर दैट F1, O to F1 एंड लाइक दैट. जहाँ पर भी इमेज मिलेगा वहाँ से कहाँ से लेके उसको डिस्टेंस मेजर करना है? O से लेके. ओके, येस, द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ O आर टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है. यहाँ पे देखो, वाइल दोस मेजर टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव. तो यहाँ पे मिला और यहाँ पे अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया तो वो कैसे आएगा? पॉजिटिव. और यहाँ पे किया तो कैसे आएगा? दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो नेगेटिव. डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबाव आर टेकन टू बी पॉजिटिव. ओके, अबाव पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो आर टेकन टू बी नेगेटिव. तो बिलो जो है वो नेगेटिव है एंड अबाव कैसे आएगा? पॉजिटिव. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है. फोकल लेंथ मतलब क्या? द ओरिजिन से लेके ऑप्टिकल सेंटर दैट इज O से लेके जितने भी लेंथ, ओके, टिल F1 और O से लेके टिल F2 और O से लेके टिल 2F2. सो दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. यू ऑल नो ऑल दिस टर्म. ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसी होती है फोकल लेंथ? पॉजिटिव. वाइल दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव. रिमेंबर दिस बिकॉज दिस विल कम इन योर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस और इन योर सम्स ऑल्सो. अगर फोकल लेंथ लिया है कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसे आएगा? पॉजिटिव आएगा. और अगर कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव, ठीक है. यस. Then what is the lens formula? The formula showing the relation between
the distance of the object, that is u, the distance of the image, that is v, and the focal length is called as lens formula. Okay, यहाँ पे देखो, this is what, this is the object. तो ऑब्जेक्ट को कैसे लेंगे, u, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है तो इट विल टेकन एज u, एंड यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा अगर, तो इट विल टेकन एज व्हाट, v, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज v, and the focal length, you all know that what is the focal length from O to till till this or till to f1, so this is the focal length. ठीक है, so what formula we will get, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Very easy, just इमेज के लिए क्या लेना है, v, एंड ऑब्जेक्ट जहाँ पर है उसको u लेना है. ठीक है, yes. देन द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या, जूमिंग करते हैं, जूम करते हैं, yes, so that is called as magnification. So the magnification due to a lens is the ratio of the height of the image, that is h2 to the ratio of height of object. Okay, तो इमेज जो फॉर्म होगा उसको क्या लेंगे, h2, एंड ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज h1. So magnification is equal to height of the image divided by height of the object, so h2 upon h1. And the magnification due to the lens is also related to the distance of the object, that is u. Okay, ऑब्जेक्ट जो लिया है वो कैसा है, u, and that of the image, इमेज का डिस्टेंस कैसे मेजर है, v. So magnification is equal to distance of the image, that is what, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, v. Okay, डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे मेजर किया, u. So m is equal to v upon u. Okay, so these are the two formulas of magnification. Then the power lens. What is the power of the lens? The capacity of a lens to converge or diverge the incident rays. Okay, तो उसका जो capacity है, the capacity, power which means what, capacity of the lens to converge इंसिडेंट रे एंड डाइवर्ज इंसिडेंट रे, उसको इंसिडेंट रे को कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है, उसको कन्वर्ज करना है कि डाइवर्ज करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पावर ऑफ द लेंस. द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स फोकल लेंथ, तो वो किस पे डिपेंड होती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड होती है. पावर इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, हियर यू कैन सी 1 upon f. Okay, so power is the inverse of focal length and it is expressed, f is expressed in meter. So the unit of power of a lens is a diprode, d, that is called as d. Okay, so power is what, inverse of focal length, and focal length को कैसे measure करते हैं, meter. So 1 diprode is equal to 1 upon 1 meter. ध्यान में आ रहा है, yes. Combination of the lenses. Okay, the last part of our today's class, combination of lenses. Here you can see when the two lens combines with each other, what happens. If the two lens with the focal length f1, okay, and f2, उसकी इसकी focal length f1 है और इसकी f2 है, are kept in contact with each other, then the combination has an effective focal length which is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Okay, तो 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. That is the combination of length. क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ focal length. If the power of the two lenses are p1 and p2, okay, उसकी power है p1 and p2, then the effective power of the combination is what, p is equal to p1 plus p2. But हम लोगों ने लास्ट में ये लास्ट वाली इसमें क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 upon f. ओके, यस, सो हियर यू कैन सी 1 upon f. सो p1 कैसे आएगा, 1 upon f1, एंड p2 कैसे आएगा, 1 upon f2. ठीक है, you understand the concept? Yes, so this is a very easy concept which we have learned today. The images formed by concave lens. Go through the video. Thank you.